और सुनो, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास नहीं, अच्छा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे भाई वाह कब रखेंगे तुम लोग का, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो आज हम लोग पढ़ते हैं असेंबलर। थर्ड जनरेशन। हाँ असेंबलर आया किसमें? सेकंड जनरेशन में। किसमें आया? सेकंड जनरेशन। हाँ सेकंड जनरेशन में। असेंबलर आपका सेकंड जनरेशन लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है। असेंबलर क्या करता है आपका? एज ए इनपुट असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लेता है। एज ए इनपुट क्या लेता है? असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम। जैसे बाय द वे असेंबलर है, असेंबलर, असेंबलर एक तरीके का कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे ए असेंबलर है, क्या है? असेंबलर। असेंबलर आपका एज ए इनपुट लेता है असेंबली लैंग्वेज का असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और एज ए आउटपुट क्या देता है? ऑब्जेक्ट फाइल। क्या देता है? ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल। और ऑब्जेक्ट फाइल ये तभी जनरेट करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल ही केवल नहीं जनरेट करता है, एरर का भी लिस्टिंग करता है। एरर का लिस्टिंग करता है। एरर का लिस्टिंग करता है। जैसे कैसे तुम्हारा पाइथन में एरर रहता है, जब तक एरर प्रोग्राम में रहता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है क्या? नो सर। नो सर। वैसे ही आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज में है, जब तक कि असेंबलर जो है आपका एरर का भी लिस्टिंग करता है। क्या करता है? एरर का भी लिस्टिंग करता है। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में एरर होगा, उस एरर को भी रेक्टिफाई करता है, चेक करता है असेंबलर। जब तक कि एरर सारा रेक्टिफिकेशन नहीं हो जाए एरर का, तो असेंबलर आपका ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाएगा। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। और असेंबलर जो है एज ए इनपुट असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लेता है, और एज ए आउटपुट क्या देता है? ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल। और ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करने से पहले एरर का लिस्टिंग करता है। हाँ एरर का लिस्टिंग करता है, तभी वो जनरेट करेगा ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। तो असेंबलर के पहले डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं। बना लिए? यस सर। हाँ अब लिखो पहला पॉइंट, असेंबलर इज ए असेंबलर में सर। हाँ असेंबलर में, असेंबलर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। असेंबलर कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सेकंड पॉइंट लिखिए, as we know that computers can execute only codes written in What sir? codes, codes written in
codes written in machine language. सर रिपीट कीजिएगा. As we know that computers can execute, as we know that computers can execute only codes, as we know that computer can execute only codes written in machine language, codes written in machine language, codes written in machine language, codes written in machine language. A special program, a special program, a special program called the assembler, called the assembler, called the assembler is required to, called assembler is required to, called the assembler is required to convert the code, called the assembler is, called the assembler is required to convert the code, convert the code, convert the code written in assembly language, convert the code written in assembly language, convert the code written in assembly language. सर कोई वेटिंग में है? रिक्वायर्ड टू के बाद एक मिनट, काजल नब्जी, हाँ, required to convert the code written in assembly language, written in assembly language into an equivalent code, into an equivalent code, into an equivalent code in machine language, in machine language, code in machine language, असेंबली लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज into an equivalent code in machine language, equivalent code in machine language, which contains only, which contains only, which contains only 0 and 1, which contains only 0 and 1, which contains only 0 and 1. ठीक है, मतलब कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को असेंबलर क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट. देयर इज ए 1-to-1, कैसे? देयर इज ए 1-to-1, there is a 1-to-1 correspondence, there is a 1-to-1 correspondence, there is a 1-to-1 correspondence, there is a 1-to-1 correspondence between the assembly language, between the assembly language, between the assembly language, between the assembly language code, between the assembly language code and the between the assembly language code and the machine language code. Machine language code. Next point. If there is an error, if there is an error, if there is an error, the assembler, if there is an error, the assembler gives a list of errors. If there is an error, if there is an error, the assembler gives a list of errors. The assembler gives a list of errors. If there is an error,
The assembler gives a list of errors. The assembler gives a list of errors. If there is an error, the assembler gives a list of errors. Next point. Next point. The object file is created. The object file is created. The object file is created. The object file is created only when the object file is created. The object file is created only when the assembly language code. The object Sir, file only is, when बोले हैं? the object file is created only when the assembly language code. Only when the assembly language code. Only when the assembly language code is free from errors. Is free from error. जब आपका एक भी एरर नहीं होगा assembly language. सर रिपीट कर दीजिए ना. Is the object file is created only when the assembly language code is free from errors. Is free from errors. जब तक एरर होगा आपका मशीन कोड जनरेट नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए. द ऑब्जेक्ट फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड. द ऑब्जेक्ट फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड. द ऑब्जेक्ट फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड as and when. The object file can be executed as and when required. As and when required. ऑब्जेक्ट फाइल तभी बनेगा जब उसका रिक्वायरमेंट होगा. लास्ट पॉइंट लिख लीजिए. An assembler only translate. An assembler only translate. An assembler only translate an assembly language program. An assembler only translate an assembly language program. An assembly language program. An assembly language program into machine language. Into machine language. अभी हो गया हम लोग का. असेंबलर समझ गए आप लोग? असेंबलर क्या होता है? यस सर, हो गया. हाँ. अब हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में. ठीक है. देखो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है वो क्या किया गया, सेकेंड जनरेशन के लैंग्वेज में ही रिफाइनमेंट किया गया. ठीक है. सेकेंड जनरेशन के लैंग्वेज में ही रिफाइनमेंट करके लाया गया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. कौन सा लैंग्वेज लाया गया? थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. अब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्या किया जाता है, जो स्टेटमेंट लिखा जाता है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा जाता है. आप लोग सारे लोग अवेयर होंगे, सब लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग करते होंगे. यस सर. पाइथन भी आपका थर्ड जनरेशन में है. किसमें? थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है. तो देखते हो थर्ड जनरेशन में इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में आपका प्रोग्रामिंग किया जाता है. और जैसे आपको देखो थर्ड जनरेशन में आया बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल, सी प्लस प्लस, जावा. ये सब आपका कौन सा लैंग्वेज है? थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. और सुनो एक में कौन बैटिंग में? शुभम. शुभम वैसे ज्वाइन करेगा तो बैटिंग में नहीं रहेगा, केवल नाम से लॉगिन कर रहा है. उसको बोलो आईडी रोल नंबर से लॉगिन करेगा. ठीक है. देखो एक लैंग्वेज था सी, लैंग्वेज है सी, और एक लैंग्वेज का नाम था फोर्थ, FORTH.
TH। सी और फोर्थ जो है ये दोनों लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज का भी फीचर है, असेंबली लैंग्वेज का भी फीचर है किसमें? सी और फोर्थ में। अब बोलोगे असेंबली लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं हम लोग? तो हार्डवेयर लेवल पे प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। किस लिए? हार्डवेयर लेवल पे प्रोग्रामिंग के लिए। किसके लिए? हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो हाँ, और दूसरी बात कि ये सी जो लैंग्वेज है इसका मेनली यूज करते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, लेकिन सी का मेनली यूज होता है किसमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, तो कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे? सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो सी लैंग्वेज जो है मेनली ऐसा सॉफ्टवेयर में यूज होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सुनो, जैसे आपको बताए कि हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेटर यूज होता है, वैसे हाई लेवल लैंग्वेज यानी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में भी दो ट्रांसलेटर यूज होता है। एक का नाम है कंपाइलर और एक का नाम है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर कैसा ट्रांसलेटर है? किसका? हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज का, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है। तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लीजिए थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, ब्रैकेट में कर लीजिएगा हाई लेवल लैंग्वेज। कुछ पॉइंट लिख लीजिए। स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज are a refinement, third generation programming languages are a refinement of सर रिपीट कर दीजिएगा। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आर रिफाइनमेंट, हाँ रिफाइनमेंट थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद क्या? थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ए रिफाइनमेंट ऑफ टू सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। सर थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ए रिफाइनमेंट ऑफ सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। लिखो सेकंड पॉइंट, द सेकंड जनरेशन, द सेकंड जनरेशन, द सेकंड जनरेशन ब्राउट, म्यूट कर लो। सेकंड जनरेशन ब्राउट लॉजिकल स्ट्रक्चर, द सेकंड जनरेशन ब्राउट लॉजिकल स्ट्रक्चर, the second generation brought logical structure to software, the second generation brought logical structure to software, the second generation brought logical structure to software। इसी में कर लीजिए the third generation was introduced to, The second generation brought logical structure to software. logical structure to software। इसी में कर लो the third generation was introduced to, the third generation was introduced to make the languages, make the languages, make the languages more, make the languages more programmer friendly,
मतलब कि थर्ड जनरेशन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है। बात समझ रहे हो ना? यस सर। हेलो, हाँ, Yes. थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज आपका प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है। आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। इन जनरल a statement written in a high level programming language, a statement written in a high level programming language will expand into several machine language instruction. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हाई लेवल लैंग्वेजेज, मशीन लैंग्वेज के बाद कुछ नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाई लेवल लैंग्वेजेज fall somewhere between natural languages and machine languages. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। a translator is natural languages and machine languages. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। A translator is needed. A translator is needed to translate the instruction. A translator is needed to translate the instruction. A translator is needed to translate the instruction. A translator is needed to translate the instruction written in a high level languages. Written in a high level language into the machine level language. ठीक है, अब कर लीजिए एग्जाम लिखो। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेज आर बेसिक, लिख दे क्या? बेसिक फॉर्ट्रान। सर ये अगला पॉइंट होगा। अरे हाँ, एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेज आर बेसिक, कॉमा फॉर्ट्रान, कॉमा कोबोल, कॉमा पास्कल,
Pascal. C, C++, Java. ये सब किसमें आ जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। अब हेडिंग बनाइए, एडवांटेज ऑफ 3GL। एडवांटेजेज ऑफ 3GL। एडवांटेज ऑफ 3GL। पहला पॉइंट, द कोड इज मशीन इंडिपेंडेंट। सर द एडवांटेज ऑफ क्या बोले सर? एडवांटेज ऑफ 3GL। एडवांटेज ऑफ 3GL लिख लीजिए। द कोड इज मशीन डिपेंडेंट। द कोड इज मशीन इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट तो असेंबली और मशीन लेवल लैंग्वेज था। द कोड इज मशीन इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, it is easy to learn. It is easy to learn. It is easy to learn and use the language. It is easy to learn and use the language. It is easy to learn and use the language. हाँ, इस लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना दोनों क्या होता है? इजी होता है। नेक्स्ट, देयर आर फ्यू एरर्स। बहुत कम एरर आता होगा आप लोग का प्रोग्राम लिखते होगे पाइथन में। तो देयर आर फ्यू एरर्स। देयर आर फ्यू एरर्स लिख लिए। देयर आर फ्यू एरर्स लिख लिए ना? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज इजी टू डॉक्यूमेंट। इट इज इजी टू डॉक्यूमेंट। इट इज इजी टू डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंड। इट इज इजी टू डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंड द कोड। इट इज इजी टू डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंड द कोड। एक कमेंट लगाते होगे ना पाइथन में आप लोग? यस सर। कैसे लगाते हो उत्तम? यस सर, हैशटैग से या हैशटैग देख के सर या ट्रिपल वो ऊपर वाला कॉलम ऊपर कर देते। ट्रिपल कोट। ट्रिपल कमेंट्स होता है बोला सर। तो वो कमेंट क्या हुआ? डॉक्यूमेंटेशन हुआ प्रोग्राम का। क्या हुआ? डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन। आगे लिखिए, इट इज इजी टू मेंटेन द कोड। नेक्स्ट पॉइंट, it is easy to maintain the code. हाँ, it is easy to maintain the code. Next point, it is easy to detect. It is easy to detect and correct errors. It is easy to detect and correct errors. एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना बहुत ही क्या होता है? आसान होता है, इजी होता है। अब कर लीजिए। डिसएडवांटेज कर लो। डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। डिसएडवांटेज ऑफ 3GL जी। डिसएडवांटेज ऑफ 3GL। कैमरा सब लोग ऑफ रखते हो जी? ऑन रखा करो, कैमरा ऑन रखो। हाँ, डिसएडवांटेज, कोड मे नॉट बी ऑप्टिमाइज्ड। 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 Code may not be optimized. Second point. ऑप्टिमाइज सर। हाँ, second point. The code is less efficient.
The code is less efficient. The code is less efficient. Next point. It is difficult to write. सर क्या था लास्ट कोड? द कोड इज The code is less efficient. Next point. It is difficult to write. It is difficult to write a code. It is difficult to write a code. It is difficult to write a code. Write a code that control the CPU. That control the CPU. That control the CPU, comma. That control the CPU, comma. Memory. 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 And the register. Memory and the register. Memory and register. ठीक है. It is difficult to write a code that controls the CPU, memory and register. ठीक है. समझ गए ना? अब नेक्स्ट. It is difficult to write a code. It is difficult to write a code that controls the CPU, comma, memory and register. And register. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में. किसके बारे में? हेलो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. हाँ, कंपाइलर इंटरप्रेटर. बोलिए सर. हाँ, और नहीं ठीक है. और उसके बाद पढ़ाएंगे 4GL. ठीक है, 4 जनरेशन लैंग्वेज. फिर पढ़ाएंगे 5GL, 5 जनरेशन लैंग्वेज. ठीक है. और अगले क्लास में ये बता देंगे. बाय बाय. एक्सक्यूज मी सर. हाँ, एग्जाम कैसे होगा ये? अरे ऑनलाइन लिखा हुआ है, देखो मैंने ऑनलाइन होगा. MCQ होगा सारा. गूगल फॉर्म पे. हाँ, गूगल फॉर्म. थैंक यू सर. चलिए, रोल नंबर 1. यस सर. 2, 3, 4. 4 प्रेजेंट सर. 5. प्रेजेंट सर. 6. प्रेजेंट सर. 7. प्रेजेंट सर. 8. 9. प्रेजेंट सर. 10. प्रेजेंट सर. 11. यस सर. 12. प्रेजेंट सर. 13. प्रेजेंट सर. 14. यस सर. 14. 15. प्रेजेंट सर. 16. प्रेजेंट सर. 17. प्रेजेंट सर. 18. यस सर. 19. Present, sir. 20. यस सर. 21. 22. यस सर. 23. यस सर. 24. 25. यस सर. 26. 27. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. 28. 29. प्रेजेंट सर. 30. 31. प्रेजेंट सर. सर रोल नंबर 19 बना दीजिएगा तो छूट गया है. कितना? 19. 19 बना हुआ है. तुमको कैसे पता चला? 25 सर. 25 भी बना हुआ है. बोले हो तो तब ना बनाए हैं, तो पूछते क्या हो फिर? 31 प्रेजेंट सर. 32. प्रेजेंट सर. 33. 34. Present, sir. 35. प्रेजेंट सर. 36. सर 24 बन गया है. सर 24 बन गया है. नहीं बोलोगे तब ना बनेगा. बन गया सर है. बोले थे, आवाज नहीं गया. 36. यस सर. 37. प्रेजेंट सर. 38.
Present, sir. 39, Yes, sir. 40, 41, 41, देखो ये नहीं बोल रहा है। 41 बन गया है। 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Yes, sir. 47, 47, 48, Present, sir. 49, 50, Present, sir. Yes, sir. 50. 49 and 50 present. 51, Yes, sir. 52, Present, sir. 53, 54, 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, 58, Present, sir. 59, 60, Yes, sir. 61, 62, 63, 64, Yes, sir. 64. 65, Yes, sir. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, Yes, sir. 72. 73, 74, 75, 76, Sir, 71. Present, sir. ठीक है 76, 77, sir. 77, Yes, sir. 78, Yes, sir. 78. 79, Yes, sir. 79. 80, 81, Present, sir. 82, Present, sir. 83, 84, 85, Yes, sir. 85. 86, Present, sir. 87, Present, sir. 88, Present, sir. 89, Yes, sir. 89. 90, Present, sir. 91, 92, 93, Yes, sir. 93, 93, sir. 93 बन गया 93, 94, 95, 96, 97, 98, Present, sir. 99, 100, 101, 102, 103, Sir, 97, sir. Present, sir. 104, Yes, sir. 104. 105, Present, sir. 106, 107, 107 present, sir. 108, 109, Present, sir. 109. 110, Yes, sir. 110. 111, Present, sir. 111. 112, 113, 114, 115, 116, sir. Khatam. 73 बन गया है जी सर हो गया सर मेरा 24 बन गया सर 24 71, sir. 71 सर 73 71 बन गया है 99, sir. 78 सर 78 जब तुम बोले हो तो फिर पूछते क्या हो सर 97 सर नहीं बोले थे सर बना दिए सर 24 बना दिए हैं सर 100 सर 24 बना दिए हैं हाँ बन गया सर रोल नंबर 8 बना दीजिएगा सर 8 बोलते का नहीं हो नहीं बनाएंगे 18 बन गया सर तुम 10 बार पूछेगा क्या जी इसके पहले भी पूछा था ना 18 19
ठीक है, आराम से बोला करिए। अब सब बच्चा पूछेगा मेरा बन गया सर, तो 10 मिनट ये बताने में लगेगा हमको। चलो अगले क्लास में कंपाइलर इंटरप्रेटर बताएंगे, ठीक है। सर कितना क्वेश्चन रहेगा वो एग्जाम में? ठीक है सर।